Hi friends, and how are you doing today? Thanks for catching me up once again for today's video in which we are going to share sample answer of one of the latest cue card. Let's without wasting any time quickly check out what the cue card is and then I will share the idea behind along with the sample answer. The cue card is talk about a time when you moved your school or maybe house. You can keep any idea, but the idea that I'm going to share would cover the both things. The cues for this particular cue card can be when it was, why you moved, where you moved, and how was the overall experience. Well, as you know that I share the idea in the regional language Hindi, so that's what I'm going to do now. आइडिया इसके लिए बहुत ही रियलिस्टिक है और आप में से पहले भी मैंने एक क्यू कार्ड आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपने कितने स्कूल चेंज किए। आप में से कई सारे नए सब्सक्राइबर होंगे तो अभी आप मुझे बता सकते हैं मैंने नर्सरी से लेकर 10+2 तक एक ही स्कूल में पढ़ाई की है अपने सिटी मोगा में। आपने कितने स्कूल बदले अपने स्कूल टाइम में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर किया था कि फर्स्ट डे एट स्कूल, उसमें भी ये मैंने क्वेश्चन राइज किया तो यहाँ पर एक एक्सट्रीम किसी का आंसर आया था, शायद उसने 8 के 9 लिखा था, मतलब हर क्लास में ये स्टूडेंट अपना स्कूल चेंज कर रहा था। वेल, आपने कितने स्कूल चेंज किए आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आइडिया ये रहेगा कि जब आप थे कोई 8वीं क्लास में तब तक आप किसी एक गांव में रहते थे, पुराने घर में रहते थे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, काफी मजा करते थे, बहुत ही इंजॉयबल एनवायरनमेंट रहता है, विलेजेस का पीसफुल होता है, क्लीन होता है और काफी आप फन करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। लेकिन जब आप 8th क्लास में थे उस टाइम पर आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि आपके बेटर फ्यूचर के लिए, वैसे आपका बेटर फ्यूचर योर ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट मोगा में भी हो सकता है जहां आप मेरे पास आइल्स प्रेपरेशन के लिए आ सकते हैं। तो अभी आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि आप सिटी में मूव कर जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी जॉइंट फैमिली से सेपरेटली रहना था, जो आपके लिए काफी मुश्किल था। इसके बारे में सोचना, मूव करना किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपको कोई जानता नहीं था, तो शुरू में आपको काफी दिक्कत आई। लेकिन आप लकी थे कि आपका जो नेबर था, नेबर मेरे क्यू कार्ड्स में ज्यादातर मिस्टर सिंह होता है, अगर आप किसी और को बनाना चाहते हैं उसे बनाइए। तो अब इन्होंने आपको पूरी तरह से या हर किसी पॉसिबल वे से हेल्प किया टू मेक यू एट ईज। मेक यू एट ईज, ईज बहुत बच्चे कम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कंफर्ट देनी, आपको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उनसे जो हो सकता था उन्होंने किया। इनफैक्ट उनका जो सन था उसकी एज भी आपके जितनी ही थी और आपने भी उसी स्कूल में एडमिशन लिया जहां पर वो पढ़ रहा था, तो अब आप क्लासमेट्स भी बन गए। उसकी वजह से आप स्कूल में भी बहुत जल्दी से एडजस्ट हो गए। ऑन वीकेंड्स आपके अंकल, आपके आंट जो आपके नेबर थे आपको सिटी टूर्स पर ले जाते, आपकी फैमिली के साथ बैठते, तो इन चीजों से धीरे धीरे करते आप वहां पर एडजस्ट हो गए। और अब जो सिटी लाइफ का फ्लैशिंग एस्पेक्ट है, मॉल, सिनेमास, कैफेज, पार्क्स, ये सारी चीजें भी आपने जब एंजॉय करना शुरू की तो धीरे धीरे आप अपना गांव भूल गए और यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो गए। सो यही बात मैं करने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सैम्पल आंसर जो ऑलरेडी हमारी स्पीकिंग बूस्टर में अपलोड हो चुका है। अगर आपने बाय कर लिए तो आपने डेफिनेटली ये पढ़ लिया होगा, अगर नहीं की है तो सोच क्या रहे हो, बाय कैसे करनी है इस सैम्पल आंसर के बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं नहीं करूंगा, रादर मेरे पास एक कार्टून है जो आपके साथ शेयर करेगी। आइए देखते हैं इसका सैम्पल आंसर कैसा होना चाहिए। Well, these days it is quite common to see people moving from one place to another place for different reasons. कुछ बताने को नहीं है। I too have experienced the same thing when I was in 8th grade. कुछ strong लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, otherwise मैं बहुत ही simple and easy language use करता हूँ। Actually, earlier we used to live in a village in a joint family with grandparents, uncles and aunts. The experience of being together was amazing and the peaceful life of a village away from the hustle and bustle of cities
cannot be explained in words. Hustle and bustle, शोर शराबा, उससे दूर थी, मतलब शांति थी वहां पर, और ये चीज मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपके पास शब्द ही नहीं है. However, for my higher studies and better future, my family decided to move to city. It was not easy for all of us to leave our ancestors' house to live separately in a city where nobody knew us. We were finding it hard to adapt to the new place. Luckily, our neighbor, Mr. Singh, who was really a friendly and a kind-hearted person, he helped us in every possible way to make us feel at ease. ये मैंने आपको बताया. Surprisingly, his son Karan was my age mate and I got admission in the same school where he was studying. And just because of Karan, I could easily adjust at school and made many friends. In fact, on weekends, Mr. Singh along with his family used to take us for city tours. Although we missed our family and village initially a lot, but slowly and steadily we got used to life of city. But slowly and steadily we got used to city life, especially visiting shopping malls, cafes, park, playing in ground, studying in libraries and others. Overall, it was a time when we moved our dwelling place. And that's it. I hope you conveniently follow the sample answer. And now let's check out how you can purchase Speaking Booster. First of all, download IELTS coaching application from Google Play Store. If you are an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS. On home page, click on Store and choose Speaking Booster. Click in Buy Now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it. You're done. Happy buying!